NED Scholars is delighted to announce that General Manager of General Electric Great Solution Pakistan, Zil Farooqi and Jari Abbas, has supported NED Scholars by donating laptops for our scholars. We are really thankful to him as laptop is an essential tool for students. Please, sir, come up on stage and have few words with us. Sir Jari Abbas. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor Saab, respected teachers, Madam Neelofer, Assalamu alaikum, and the students, ladies and gentlemen, if you can. Assalamu alaikum. I'm really honored to be present on this auspicious occasion of this annual dinner hosted by NED Scholars. Really a great initiative that I have seen, and this is explained by this this graph. This is amazing exponential graph starting from 2008, from just 3 scholarships going 20 times in 12 years to 61. So I'm sure a lot of efforts and commitment has gone behind this, so really a big hand for this initiative for all those who are behind this. And I must say there's a शेर मैं कहना चाहूँगा, अहमद फराज का है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी शम्में जला दी हैं, ये विजिबल है बिल्कुल. अ बिग हैंड टू द टीम. और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट, जितने स्टूडेंट्स हैं जो इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरह कम से कम अपना एक मोटिव ये बनाइए कि जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग बहुत कामयाब होंगे. तो आप अपनी इसी तरह 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट कीजिए, जहाँ भी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल जगह उनको गाइड करें, उनको तालीम में, उनके प्रोफेशन में गाइड कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, ताकि इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़े. और इसके लिए मैं एक वो तमसीली एक वो मैं पेश करूँगा, जो हम सब इंजीनियर्स ही हैं, कि जैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है कि जिसमें एक एटम टूटता है तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और उस आगे वो 3 एटम्स को तोड़ते हैं, फिर 9 निकलते हैं. तो दिस प्रोसेस गोज ऑन. दिस इज़ अ चेन रिएक्शन which we all need to start, and it will grow exponentially. So ये रोशनी फैलाइए. That's all I wanted to say. Thank you very much, all of you. Thank you. ज़िला पाना मेरे कोलीग ज़िल फारूकी. Assalamu alaikum. Respected Vice Chancellor Sahab, Madam Neelofer, a special thanks to you. Actually, honestly, I'm not prepared to give any speech. It is a pleasant surprise to me that I'm invited on the stage to say a few words. What I would say that, and I must say that the congratulations to Dr. Suhail, first of all. I think it's a great initiative that he took, and that he carried along with it for so many years and with so many peoples, and he has really built up the organization kind of thing, and that's really amazing to see. But one suggestion that I would make, because as the slogan that I have looked at, actually it has to be improved, because what I have seen that the slogan that is mentioned there for the scholars, NED scholars, they are actually doing more than what they have aimed for. So what I would suggest, Dr. Suhail, that you might replace this one person with the right education can change the lives of his own entire family. You might replace it with that one person with the right education and right training can actually change the lives of the entire society. Because what I have seen here, that you have actually developed people who are willing to bring change into the lives of the other people. And that is more important. And I wish all of you very good luck. The way you are, you're contributing to this noble cause, and I wish all the participants and all the scholars
very best of luck. Thank you. Thank you, respectable guest, for sharing few words with us. Now we have the laptop distribution ceremony. But before distributing the laptop, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरी नज़र CSA के कुछ अफराद पे पड़ी. CSA क्या होता है, मैं एक छोटा सा लफ्ज़ में डिफाइन करना चाहूँगा. कंट्रोलर स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट. NED स्कॉलर्स का जो भी चैनल NED स्कॉलर्स तक पहुँचा है या NED स्कॉलर्स की जो भी एफर्ट हैं वो एक चेन के थ्रू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तक पहुंचती है. इन चेन के अंदर सबसे मजबूत कड़ी जो है वो कंट्रोलर स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट की है. और जैसा कि सर ने शेर कहा कि शिकवे जुल्मते शब से तो कई बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो मैं कहूँगा कि आप लोग सारे लोग इन लोगों को अप्रिशिएट करें जो कि नज़र तो नहीं आते लेकिन दिन और रात अपनी एफर्ट से हम तक ये स्कॉलरशिप को पॉसिबल बनाते हैं. थैंक यू सो मच. इसके बाद मैं अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट सर ज़िल फारूकी और सर जरी अब्बास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और साथ ही साथ रिस्पेक्टेबल वाइस चांसलर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो हैं जिनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी दी गई है और उसके साथ ही लैपटॉप भी उन्हें अलॉट किया गया है तो अपने हाथ से उन्हें ये तोहफ़ा फराहम करें. काइंडली कम ऑन द स्टेज. शुक्रिया. So please students, you have to come here one by one and to receive the laptops, please. The guest starts here. Please. First of all, I would like to invite Unza Nishad for receiving her laptop. Unza Nishad, please come on the stage and receive the laptop from the Vice Chancellor and the team. Sheikh Muhammad Hammas, please come on the stage and receive your laptop as a gift from NED scholars. Sheikh Muhammad Hammas. After that, I would like to invite Muhammad Anas Hassan, a newly inducted graduate, to receive his laptop from NED scholars. Muhammad Anas Hassan, please come on the stage. I would also like to invite Munib Laik to come on the stage and receive this gift of laptop from NED scholars. Munib Laik, please come on the stage. It is also requested to all of you to appreciate these students. Last, I would like to invite Anusha Abid to please come on the stage and receive her laptop. There is one more laptop. Please, Binish Hasib, come on the stage and receive your laptop from the respectable Vice Chancellor and the team. So please, respectable guest, you can have a seat and we can now continue our program.